Welcome to CIZ. Today I am here to share the current affairs of national and international importance for the General Studies Paper 1 of Engineering Services Examination 2020. That is of General Studies and Engineering Aptitude part. Overall, we have got the top-notch 5 current affairs from the June month of 2019 for the paper of 2020 only. Let us start with the current affairs. Let us start with the series. The first current affair of June 2019 is of G20. Friends, G20 is a group of 20 countries. In this group, mainly the economist related experts of economies of different countries, they participate along with finance ministers of the countries and the central banks such as RBI of India, Federal Bank of USA. ये सारे के सारे जो members होते हैं ये इसमें participate करते हैं. अब G20 का motive है that is to discuss about the global issues related to economy. Whatever issues are being faced by one country that might be resolved by the approach of some other country. So overall एक ऐसा platform है जिसमें सारी कंट्रीज आपस में मीटिंग करते हैं और आपस में डिसाइड करती हैं रिगार्डिंग वेरियस सॉल्यूशंस रिगार्डिंग पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी. स्टार्टिंग विद द सीरीज, you should know about the various aspects of it. The G20 summit on financial markets and the world economy is held every year to discuss the critical issues affecting the global economy. दुनिया भर की जो इकोनॉमी है, जो इश्यूज इकोनॉमी और पैसे से रिलेटेड है, बैंकिंग से रिलेटेड है, वो कोई भी इन्फ्लुएंस करता है अगर वर्ल्ड इकोनॉमी को, वो सारे इश्यूज यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं. फर्दर इट इज़ एन इंटरनेशनल फोरम जिसमें पूरे के पूरे दुनिया से सारे के सारे लीडर्स आते हैं. फॉर द गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक्स, सारे के सारी कंट्रीज की गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट्स फ्रॉम दी 19 कंट्रीज एंड 1 यूरोपियन यूनियन. इस चीज़ को ध्यान रखें कि इसके अंदर 19 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन एक एंटिटी है यूरोपियन यूनियन दैट कॉम्प्राइजेस ऑफ द नंबर ऑफ यूरोपियन कंट्रीज. So overall, the 2019 G20 summit was held in Osaka. As you can see from the picture also, all the different leaders from across the world, they all participated in this. You can see our Prime Minister Modi here, then along with Trump sahab and the other leaders. So overall, this summit was held in Osaka. Osaka is in Japan. It is the capital city of Japan. Like Mumbai is the capital city of India. Similarly, Osaka is the capital city of Japan, which discuss the 8 themes which are crucial to ensure the global sustainable development that are of global economy. जो मेन मुद्दे इसमें डिस्कस किए हैं, द वेरी फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू ट्रेड. ऑल द कंट्रीज आर फॉलोइंग सर्टेन पैरामीटर्स. मैंने एक वीडियो में पहले भी डिस्कस किया था, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, उसको फॉलो करते हैं. बायलैटरल टैक्सेस के टैरिफ्स को रिड्यूस किया गया है, वो सारे मुद्दे इसमें हैं. फर्दर मोर इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट एक कंट्री दूसरी कंट्री में करती है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द कंपनीज ऑल्सो. फर्दरमोर इनोवेशन, नई नई टेक्नोलॉजीज, नई नई अप्रोचेस, नए नए मेथडोलॉजीज को इन्वेंट करके यूज़ करके कैसे इकोनॉमिक स्टेटस को रेज किया जाए. फर्दरमोर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी. देखो आज के टाइम पे जितनी भी कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं या मीटिंग्स हो रही हैं, एनवायरनमेंट और एनर्जी उस मीटिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इशू रहता है. क्लाइमेट ओरिएंटेड जितनी मीटिंग्स है उसमें भी एनवायरनमेंट है ही है. सो ओवरऑल एनवायरनमेंट एंड एनर्जी, दिस हैज़ ऑल्सो बीन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क्स इन दिस. And followed by employment. This has been the top-notch important area where all the countries they discuss according to the economic parameter. दुनिया में जितने भी देश हैं, कुछ हद तक एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो सब में ही खराब है, except only and only one country, that is USA. From the recent report of the government of USA only, from the last 2.5 years, 2.4% of jobs has increased in USA. आज के टाइम पे यूएसए की इकोनॉमिक स्टेटस इतनी स्ट्रांग है. ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, द गवर्नमेंट हैज परफॉर्म्ड रियली वेल इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एरिया, एंड दैट इज द रीजन ओनली. In modern scenario, all the people of USA who are working in economic circle, they all are having jobs of very good strategy. So overall, employment भी इसके अंदर डिस्कस की गई है from by the different countries. Women's empowerment has been the core issue जो आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है from the safety point of view of the women. And most importantly, development and the health sector, healthcare. So development has been the core issue from the last many years, and health is also very important. आज के टाइम पे एक हेल्थ टूरिज्म का नाम का एक कंसेप्ट चल रहा है जिसमें people from European countries, people from developed countries of Australia, USA, Canada, they come to India
on tourist basis, but they get the treatment from the Indian private sector hospitals as it is very much affordable. So overall, these were the core issues which have been discussed in the G20 summit. So G20 summit was held in Osaka, and this has been important aspect of this. I hope this is clear. Let us proceed with the next news. The next current affairs is related to SECO. In short, it is SEO, Shanghai Cooperation Organization. This organization was created in Shanghai, that is of China, and this is a Eurasian political, economic and military organization. ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें चाइना और रशिया मिलकर काउंटर करने की कोशिश करते हैं यूएसए और उसके एलाइज को। ये एक ऐसा अप्रोच है जिसमें चाइना और रशिया के पास प्रिविलेज है टू काउंटर द एक्ट्स एंड डिसीजंस ऑफ अदर कंट्रीज। सो ओवरऑल, along with BRICS and SCO, it is seen as an attempt by the China and Russia to challenge the Western dominated global order and counterbalance the activities of United States and the NATO in Central Asia. Here there is a term NATO. NATO stands for North Atlantic Treaty Organization, which were adopted on 4th April 1949. Near about 19 countries of European Union plus North American, they all participate, they make the group of NATO. So overall, NATO के साथ जो है alliance है USA का, and they all work in this domain together. Moreover, SCO has 8 member states. Please learn this from the exam point of view. एक बहुत important aspect है कितने members हैं इसके, and which are the members. 8 members includes China, Kazakhstan, Kyrgyzstan. The next one is Russia, followed by Tajikistan, Uzbekistan, इंडिया एंड पाकिस्तान। देखो, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही इसके मेंबर हैं। ऑल्दो जैसे ही कुछ साल पहले, नियर अबाउट 2-3 years ago, जैसे इंडिया इसका मेंबर बना, उसके नेक्स्ट ईयर ही पाकिस्तान ऑल्सो बिकेम द मेंबर ऑफ इट। सो अर्लियर इंडिया एंड पाकिस्तान वर जस्ट ऑब्जर्वर मेंबर्स। सो दीज आर द मेन 8 परमानेंट मेंबर्स ऑफ दिस एज ऑफ नाउ। लेकिन आज के टाइम पे 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं, मीन्स ऑब्जर्वर मेंबर्स भी हैं, जिनमें पहला नाम आता है अफगानिस्तान का, सेकेंड नेम इज ऑफ बेलारूस, थर्ड नेम इज ऑफ ईरान, एंड द फोर्थ नेम इज ऑफ मंगोलिया, दैट इज अबव चाइना। And 6 dialogue partners includes Azerbaijan, Armenia, Cambodia, Nepal, Turkey and Sri Lanka. Dialogue partners includes only those countries which are working on to the some core themes of the issues which are discussed at this meeting. So main चीज सबसे important है, that is regarding the 8 permanent members. Please learn those names, and followed by the 4 observer members. And finally, the recent summit of SEO that was adopted at the Bishkek Declaration in the 9th SEO Summit, 19th. So overall 19th SEO Summit जो है वो बिश्केक में हुआ था. As you can see, Bishkek is a city in Kyrgyzstan. From here you can see that 2019, from 13 to 14 June 2019 in Bishkek only this meeting was concluded, और इस meeting जो है various issues were discussed. So here is our Prime Minister, and here is Chinese leader, then here is President of Russia and the other leaders of this region. You should learn either through the map based pattern regarding the countries of Central Asia, or just learn the major cities of these capitals of these countries only. So overall, most important part is regarding the names, structure, how it works, and where is its headquarters. Let us proceed further with the next news. The next current affair is related to United Nations Security Council's non-permanent seats and India's candidature. As you can see from here, there are 5 permanent members of United Nations Security Council and near about 10 members of non-permanent stature. When we talk about the United Nations, as I told you earlier also, 24th October 1945 को जो है पहली बार United Nations का जो है गठन होता है. After the Second World War, there was a meeting across the world that the other wars should not be prohibited in future if ever some situation arises. So दुनिया भर में पीस को मेंटेन करने के लिए यूनाइटेड नेशंस का जो है गठन हुआ था, और यूनाइटेड नेशन के अंदर उस टाइम पे 5 परमानेंट मेंबर बनाए गए थे. सो फर्स्टली लर्न द नेम्स ऑफ 5 परमानेंट मेंबर्स विच इंक्लूड्स यूएसए, फॉलोड बाय चाइना, रशिया, फ्रांस एंड यूके, ब्रिटेन. सो ओवरऑल These are the 5 permanent members of United Nations Security Council. अब आज के टाइम के तौर पे 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो हर साल उसमें नए 5 मेंबर्स ऐड ऑन और रिप्लेस होते रहते हैं. सो लेट अस प्रोसीड विद दिस.
Along with 5 permanent members, the Security Council United Nations has temporary members are also, and that hold the seats on rotation basis by the geographic region. जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी सीट्स रिप्लेस होती है ऑन द बेसिस ऑफ geographic pattern. Sometimes some countries from the European continent, they get the chance. Moving further, sometimes some countries from Asia, and sometimes from Australia also, and sometimes from the African continent, followed by South America and North America. So overall बाकी सारी countries को भी region wise उनकी टर्न आती है. जो 5 permanent members हैं उनमें नंबर 1 आता है आपका चाइना, followed by France, then Russia, then UK and the USA. And the 10 non-permanent seats that are distributed on regional basis includes, इस पैरामीटर को ध्यान से देखें, 5 मेंबर अफ्रीकन एंड एशियन स्टेट से होंगे. हर बार जो है 5 मेंबर होंगे अफ्रीकन एंड एशियन स्टेट से. सो 2 कॉन्टिनेंट्स आर काउंटेड इन दिस, फॉलोड बाय 1 मेंबर फ्रॉम द ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स. जितने भी ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स हैं उनमें से हमेशा 1 मेंबर होगा. एंड 2 मेंबर्स फ्रॉम साउथ अमेरिका और लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन स्टेट्स. कैरिबियन स्टेट्स आर दोज small island based countries onto the proximity of Mexico and USA, जिसको हम आज के टाइम पे बोलते हैं वेस्ट इंडीज. इट इंक्लूड सर्टेन island areas of Trinidad and Tobago and many more. Moving further, the 2 members are always there from the Western European and other states also. Each year 193 members of United Nations General Assembly, आज के टाइम पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 193 मेंबर्स हैं और वो वोट करते हैं इस चीज़ को जो है पैरामीटर को यूज़ करके चूज करने के लिए नए नए मेंबर्स को. इट इलेक्ट्स 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स फॉर 2-year टर्म. जो नॉन परमानेंट मेंबर्स उनका टाइम है सिर्फ और सिर्फ 2-year टर्म का एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल विद 5 मेंबर्स विच आर रिप्लेस्ड एवरी ईयर. So overall, this is the structure of replacement of the non-permanent members. लेकिन जो most important aspect है इसमें आता है आपका 5 permanent members का. So overall, this is the structure, and with the passage of time, there is a possibility that India will also be staking the claim for the permanent membership only. So in that case, the seats of permanent members will increase from 5 to 6 or 7. Next time, there is a possibility Mexico, India, Brazil. These are the hotspot countries which are fighting for the seat of permanency. I hope this is clear to you. Let us proceed with the further next current affair, and that is of circular economy. Friends, this current affair I have taken from the Hindu newspaper. During the month of June 2019 only, in the Hindu, for many days, this news was there again and again. It is a very simple term regarding the circular economy that you should understand. As the picture is showing here, in case of circular economy, different things are manufactured, then they are consumed by people, and furthermore, once they are used, after some time, there is a possibility उनकी जो quality है वो उतनी सही नहीं रहती, so they are thrown out and they are either dumped into the dustbin. So overall, वो waste बन जाता है. अब circular economy है क्या? Circular economy का एक ही objective है, so as to eliminate the wastage and so as to reuse the available resource again and again. So this is the major task of circular economy. As you can see from here also, it is a model of production and consumption, जिसमें क्या नई चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं और कंज्यूम होती हैं, which involves sharing, leasing, reusing, repairing, refurbishing and recycling the existing materials and products as long as possible. तो इसके अंदर आता है आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको रीयूज़ करना, उनको रिसाइकल करना और टाइम टू टाइम उनको यूज़ करना. In this way, the life of cycle products is extended. So overall, 5R principles एक concept है जो यूनाइटेड नेशन ने पहली बार दिया था, उसको यूज करते हैं. अब 5R प्रिंसिपल जो है वो क्या कहते हैं इसके अंदर? The first R stands for reduce, so as to reduce the wastage. Second R shows the reuse, दोबारा से उसको यूज करना. Followed by recycle, and that is of recycling the available waste use. And remanufacture, many times there might be some electronic component जो as such उसको reuse नहीं कर सकते, लेकिन उसकी remanufacturing होना ज़रूरी है. Followed by repair and refurbishing. So ये 5R का principle है जो show करता है कैसे इसको use कर सकते हैं. And finally, at the Circular Economy Symposium of 2019, Niti Aayog CEO said that circular economy has the potential to generate 1.4 crore jobs in next 5 to 7 years. आने वाले टाइम में 5 से 7 साल के अंदर
सर्कुलर इकोनॉमी एक ऐसा रोल प्ले करेगा हमारी कंट्री की एम्प्लॉयमेंट सर्कल के अंदर दैट इट विल इंक्रीज द जॉब्स अप टू 1.4 करोड़ सेक्टर. So overall, this is going to be a very good initiative from the government of India also. And let us proceed with the next current affair that is related to the United Nations Women's News Report. Friends, this news has also been taken from the United Nations website only. In the recent scenario, United Nations के जितने भी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिपोर्ट्स आती हैं, उन सब के पॉसिबिलिटी रहती है क्वेश्चन आने की. और ये एक ऐसा एरिया है जो हम बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. दैट इज द रीजन आई हैव टेकन दिस. लेट अस प्रोसीड विद दिस. इस रिपोर्ट में इस बार उन्होंने फोकस किया है रिगार्डिंग द जेंडर इक्वालिटी दैट वुमेन्स आर पार विद मेन अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द जॉब सेक्टर, अक्रॉस द सोशल पैरामीटर्स. In this, it works globally to make the version of the Sustainable Development Goals a reality for women and girls, and it also stands behind the women's equal participation in all aspects of the life. देखो सोसाइटी के अंदर डिफरेंट कंट्रीज दे फॉलो डिफरेंट अप्रोचेस, दे प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ फैसिलिटीज फॉर द वुमेन. इन द रिसेंट सिनेरियो यू कैन सी सऊदी अरेबिया ने भी अपनी कंट्री के अंदर थोड़े से रूल्स को रिलैक्स किया फॉर द वुमेन एज दे हैव गिवन द अपॉर्चुनिटी टू द वुमेन फॉर ड्राइविंग लाइसेंसेस एंड फर्दर मोर फॉर वॉचिंग द मूवीज इन सिनेमा हॉल्स, एंड ऑल्सो दे हैव ऑल्सो अलाउड द वुमेन टू सी द मैचेस इन द stadiums also, which was not allowed earlier. And this is an initiative by the Saudi Arabia government that shows the improvement in the women's area. So overall उसी चीज़ को फोकस करके उन्होंने दुनिया भर के जो स्टेटस हैं, उनकी प्रिविलेज है, उनको फोकस करके एक रिपोर्ट निकाला है. इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने आगे क्या बोला है? They are focused on 4 strategic priorities. It is a United Nations entity which was established in 2010, and it is dedicated to the gender equality and the empowerment of women. अब जो इस बार की रिपोर्ट है उसने फोकस किसके ऊपर किया है? इट टॉक्स अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ फैमिलीज ग्लोबली एंड प्रोवाइड्स द रिकमेंडेशन टू सपोर्ट द लॉज. फ्रॉम हियर इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन यूपीएससी IES एग्जाम ऑल्सो. सो उसके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंस होता है कि 2019 की यूनाइटेड नेशंस की वुमेन्स रिपोर्ट है वो किसके ऊपर फोकस करता है? इट फोकस ऑन अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ फैमिलीज ग्लोबली. दुनिया भर में जो फैमिलीज आपस में कैसे रहती हैं और उनके लिए क्या प्रिविलेजेस हैं. एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द रिकमेंडेशंस टू सपोर्ट द लॉज. उस जितनी कंट्रीज हैं, हर कंट्री का वुमेन के लिए अलग लॉ है और उन लॉज को कैसे यूज करके सपोर्ट कर रहा है वुमेन की इंप्रूवमेंट के लिए. एंड सर्टेन पॉलिसीज हर कंट्री के अंदर गवर्नमेंट बनाती है और पॉलिसीज दैट मीट द नीड्स ऑफ ऑल द फैमिली मेंबर्स. जितनी भी सोसाइटी के फैमिली मेंबर्स हैं, कितनी पॉलिसीज उनको सपोर्ट करती हैं, उनको एंडोर्स करती हैं, वो सारा इसके अंदर आया है. नेक्स्ट, मेनली women and the girls and the concrete proposals for the implementation of the same report has also been taken into account. And finally, the United Nations Women report that has been released, it has the title of Progress of World's Women 2019-20 और इसकी थीम जो है that talks about the families in changing world. Please learn this also. There is a possibility of question being asked from the theme also. So theme जो इस बार है that is regarding the families in a changing world. So overall, as you can see from this picture also, across the world families stays together, they follow different privileges to live together, and different countries have different laws which are followed by the people so as to live together in society. I hope guys that you got these current affairs which are important from exam point of view 2020 IES, and we'll be upcoming with the current affairs of next months also in a shorter while. And I hope that you liked it. If you like it, please do like and subscribe and share as more as you can. Thank you for watching.